Hello students, hope you are studying well at your home. In the previous video, we discussed about the some cell organelles like nucleus and endoplasmic reticulum. Now let's take further. We will discuss about some more important organelles of the cell. Now let's take next organelle, that is ribosome. We'll start with the ribosome. Ribosome, as I already told you, ribosome is the cell organelle which help in the protein synthesis. Ribosomes are the cell organelle which are not membrane bound organelle. Here you have to keep remember these organelles are not membrane bound organelles. When we differentiate between eukaryotic and prokaryotic, जब हमने eukaryotic और prokaryotic में difference किया था, आपको मैंने कहा था कि eukaryotic organelles जो होते हैं cell organelles वो membrane bound होते हैं, but it's not. Ribosomes are not membrane bound organelle. They are without membrane organelle. Ribosomes are the site of protein synthesis. These are the organelles which help in the protein synthesis. So they are site of protein synthesis. Here the proteins are synthesized. So that's why they are known as protein factory of the cell. They help in the protein synthesis. That's why they are known as protein factory of the cell. Ribosomes are present on the surface of ER forming a rough ER. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, ER के दो टाइप्स थे, rough ER और smooth ER, on the basis of presence of ribosome. अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो ER होगी rough ER. तो राइबोसोम या तो ER के ऊपर प्रेजेंट होंगे या फिर राइबोसोम्स प्रेजेंट रह सकते हैं in the cytoplasm also. At the time of protein synthesis, these ribosomes help in the protein synthesis joining with the RNA. So this is about the ribosomes and they are made up of proteins and RNAs. Now next cell organelle that we will discuss here is Golgi apparatus or Golgi apparatus. Golgi apparatus is another important organelle and it's also related with the ER. Golgi apparatus is a cell organelle that was discovered by the scientist named Camillo Golgi. Camillo Golgi saw the cell and they saw some structure, they colored structure inside this cell, and later on in the honor of this scientist के honor में ही इन organelles का नाम Golgi रखा गया, क्योंकि Camillo Golgi ने discovery की थी तो उन्हीं के honor में इनका नाम रखा गया Golgi apparatus. Golgi apparatus जो है ये structure है, ये present रहती है near the nucleus. These organelles are found near the nucleus. Nucleus के साथ present है and they are related in the functioning with ER. ER के साथ functioning में help करते हैं. They are formed from some sacs or vesicles like structure. इनकी जो structures है वो sacs या vesicles से form होगी. Cisternes भी present होती हैं जो इनका part होगा, इनको formation में help करते हैं. They have sacs or vesicles like structure by which these Golgi apparatus are formed and they are present near to the nucleus. What they help do? Let's see. When ER form the proteins, जब ER से protein बनता है, then these proteins are get transported all over the cell organelle. Protein है, obviously सभी cell organelles को उसकी जरूरत होगी, तो इस protein को सभी cell organelle तक transport करना है. उस transportation में help करते हैं protein Golgi apparatus. The protein which is need to be transported, it come inside the Golgi apparatus. Golgi apparatus के अंदर send किया जाता है. Here it's get modified. यहाँ पे प्रोटीन के ऊपर मॉडिफिकेशन किए जाते हैं एंड आफ्टर मॉडिफिकेशन दिस प्रोटीन्स आर गेट पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स यानी कि स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स. प्रोटीन ईआर ने प्रोटीन बनाया, ईआर से प्रोटीन बनने के बाद गोल्जी अपरेटस के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. गोल्जी अपरेटस टेक्स दिस प्रोटीन्स एंड दे मॉडिफाइड दिस प्रोटीन एंड देन मेक इट रेडी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेडी बनाता है. So we can say inside the Golgi apparatus, storage, modification and packaging of protein is done. Finally, the proteins which are need to be transported are transported in the form of vesicles or inside the vesicles. So small vesicles like structures बनेगी जो Golgi apparatus से proteins को carry करके लेके जाएगी target site तक, जहाँ पे भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है. सपोज यहाँ पे हम अगर देखें ये कोई और ऑर्गेनेल है लाइक सेल मेम्ब्रेन, अगर हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो कैसे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होगा. ईआर के ऊपर राइबोसोम से प्रोटीन बनाएंगे, वहां से वो ईआर से ट्रांसपोर्ट होते हुए गोल्जी अपरेटस के अंदर जाएगा. गोल्जी अपरेटस में जाने के बाद प्रोटीन के ऊपर पैकेज मॉडिफिकेशन होगा, फिर उसे छोटे बैग्स यानी कि वेसिकल्स के अंदर पैक कर दिया जाएगा एंड देन दीज वेसिकल्स
ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन टू द सेल मेम्ब्रेन, वो प्रोटीन को सेल मेम्ब्रेन तक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा वेसिकल्स की फॉर्म में। दिस इज द वे बाय विच प्रोटीन इज ट्रांसपोर्टेड ऑल ओवर द सेल ऑर्गेनल्स। किसी भी पार्ट तक जो प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो ऐसे ही होगा। तो दिस इज अबाउट द गोल्जी अपरेटस। वी आर ड्रॉइंग हियर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। हमने यहाँ पे प्लांट सेल का डायग्राम बनाया। तो यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इन द केस ऑफ प्लांट सेल्स गोल्जी अपरेटस इज नॉट एज गोल्जी अपरेटस। यहाँ पे हम प्लांट सेल में गोल्जी अपरेटस को गोल्जी अपरेटस ना कह के वी यूज अ वर्ड दैट इज डिक्टायोसोम। हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं डिक्टायोसोम, that you will study about it in the higher classes also, because in the plant cells Golgi apparatus is not well settled, means एक तरीके से well organized नहीं होता। इसलिए प्लांट सेल के अंदर हम गोल्जी अपरेटस के लिए एक और डिफरेंट टर्म यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं डिक्टायोसोम, एंड गोल्जी अपरेटस टर्म इज यूज्ड इन द केस ऑफ एनिमल सेल। This is about the Golgi apparatus. It helps in packaging, modification and packaging of the protein. Here, one more important function of Golgi apparatus which we need to be understand. It helps in the formation of one more structure that is lysosomes. They form lysosomes. What are these? अभी lysosomes क्या होते हैं? Lysosomes are also small vesicles-like structure, small bag-like structure. Like we can say that this is a bag. They are also membrane-bound organelles. These are the membrane-bound organelles which form from the Golgi apparatus. Golgi apparatus से ही ऐसे small bag-like structures form होती है, membrane-bound structure form होती है, and these membrane-bound structures contain some hydrolytic enzyme inside it. इनके अंदर कुछ hydrolytic enzymes present होते हैं, and these hydrolytic enzymes helps in the digestion of different components. They contain some hydrolytic enzymes. Hydrolytic enzymes are enzymes which help in the breakdown of substances. Like it can be lipases हो सकता है, proteases हो सकता है। lipases यानी कि जो कि लिपिड को ब्रेक डाउन करने का काम करेगा, proteases जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। तो इस तरीके के एंजाइम्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो किसी भी कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ये एंजाइम इन लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट है। इस तरीके से लाइसोसोम क्या फंक्शन करते हैं, व्हेन समथिंग कम इनसाइड द सेल, अगर सेल के अंदर बाहर से कोई भी चीज अंदर एंटर कर रही है, कोई फॉरेन मटेरियल जो सेल का खुद का नहीं है, या फिर कोई इन्फेक्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर एंटर कर रहा है, then these lysosomes get there, they move there and they capture the substances. उस सब्सटेंस को कैप्चर कर लेते हैं, अपने अंदर लेके जाते हैं, और जब वो सब्सटेंस इनके अंदर एंटर करता है, अंदर एंटर करने के बाद जो इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, these enzymes degrade or completely kill all the substances, पूरी तरीके से इन substances को फिनिश कर देते हैं, किल कर देते हैं। This can be happen in the case of like अगर सेल का खुद का कोई ऑर्गेनेल, जो ऑर्गेनेल अब रिक्वायर्ड नहीं है, पुराना हो चुका है, या कुछ भी डेड पार्ट है सेल के अंदर जो रिक्वायर्ड नहीं है, उसे भी खत्म करने का काम लाइसोसोम ही करेंगे विद द हेल्प ऑफ देयर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो दीज आर द सेल, एक तरीके से सेल की क्लीनिंग का काम कर रहे हैं। अंदर भी अगर सेल का खुद का कोई मटेरियल है उसे खत्म करेंगे, या बाहर से अगर कुछ आ रहा है तो उसे भी खत्म करेंगे। बट सम टाइम व्हाट हैपेंस, कभी कभी सेल के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाते हैं। अगर सेल के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गए हैं तो ये लाइसोसोम्स सेल के अंदर ही इंटरनली दे स्टार्ट ईटिंग द सेल इटसेल्फ, वो उसी सेल को ही ईट करना या किल करना शुरू कर देते हैं जिनके अंदर वो प्रेजेंट होती हैं। That's why they are known as suicidal bag of the cell. We use a term for the lysosome that is suicidal bag. They are called as suicidal bag of the cell because when cell get disturbed or internal environment of the cell get disturbed, then these lysosomes kills itself, cell itself, वो खुद की ही सेल को किल कर देंगे, खत्म कर देंगे, then they are called as suicidal bag of the cell. Now we'll take some more important organelles. इसके बाद हम कुछ और important organelles की बात करेंगे। Like we'll take the next important organelle that is mitochondria. Mitochondria. As you have studied about the mitochondria in your previous classes, in the 8th क्लास माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन आपने वहां पे भी देखा है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की बात करते हैं पहले हम। माइटोकॉन्ड्रिया हैज आल्सो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, एक तरीके की डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है
This is the outer membrane, which is continuous, and inside the outer membranes, one inner membrane is present. Inner membrane is not continuous and it forms some infold inside the cell. ये जो inner membrane होती है, ये अंदर की तरफ इनफोल्ड कर हो जाती है, यानी कि अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है. This is the structure of mitochondria. It is outer membrane. It is also double membranous structure made up of two cells, outer membrane and inner membrane. आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस मेम्ब्रेन एंड इज पोरस. इसमें पोर होते हैं जो एंट्री को अलाउ करेंगे सब्सटेंसेस की. एंड इनर मेम्ब्रेन इज इनफोल्ड, गेट इनफोल्ड इनसाइड. ये अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाती है. एंड दीज इनफोल्ड्स आर नोन एज सिस्टर्नीज. These infolds are known as cisternes. These cisternes help in increasing the surface area. ये जो cisternes होती है, इनके ऊपर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं. तो सम इंपॉर्टेंट एंजाइम्स व्हिच हेल्प इन द एटीपी प्रोडक्शन और एनर्जी प्रोडक्शन, दीज एंजाइम्स आर प्रेजेंट ऑन दीज सिस्टर्नीज. इन सिस्टर्नीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. सॉरी, दीज आर नॉन एज क्रिस्टी. These infolds of inner membranes are known as cristae. These infolds of inner membrane cristals, they contain the enzymes which are required for the energy production. They are present on these cristals and they increase the surface area. एक तरीके से infold हुआ है ताकि surface area increase हो सके. ज्यादा अमाउंट में इसके ऊपर enzymes present चल सके जो कि help करेंगे ATP production के अंदर, energy production के अंदर. Inside this all part of the mitochondria is also filled with some substances. It has its own DNA. That is the important characteristics. It has also its own DNA. Like prokaryotic cells, it contains DNA in the form of circular structure, and it contains ribosome. This is the DNA, and this DNA is its mitochondrial DNA. Like हमने देखा था कि DNA जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, but this is the cell organelle, mitochondria. It also contains its own DNA. This is the important characteristic feature of the mitochondria. It contains its own DNA. इनके पास अपना खुद का DNA होता है. With the DNA, it also contains ribosome. They also contain ribosome. This is important characteristic feature that mitochondria contain its own DNA and ribosome. When the organelle contains DNA and ribosome, then it is able to form its own protein. ये अपना प्रोटीन खुद बना सकते हैं क्योंकि इनके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें प्रेजेंट है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. दोनों ही ऑर्गेनेल लाइक डीएनए इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड राइबोसोम्स, एज वी ऑलरेडी स्टडीड, राइबोसोम्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. When DNA and ribosomes both are present in the mitochondria, it can form its own protein. So it helps in protein synthesis. It can synthesize its own protein, but it's only half of its requirement. That's why mitochondria are known as semi-autonomous organelle. Mitochondria is also known as semi-autonomous organelle. Semi-autonomous organelle, that is the important term which we use for the mitochondria. It's known as semi-autonomous organelle because it has DNA as well as ribosome which are required for protein synthesis. So it can form protein of half of its requirement. Mitochondria के अंदर DNA है, राइबोसोम है, जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से ये अपनी रिक्वायरमेंट का हाफ प्रोटीन फॉर्म कर सकता है. इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल. अब नाउ लेट्स सी, we talked about that mitochondria are known as powerhouse of the cell. ये बात आपको पता है, mitochondria are known as powerhouse of the cell. माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं. क्यों कहते हैं पावर हाउस? बिकॉज इट्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. इट इज यूटिलाइज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड द एनर्जी इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. जो एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो बनती है एटीपी की फॉर्म में. एटीपी, द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज adenosine triphosphate. I am writing the full form here. The full form of ATP is adenosine triphosphate. This is also important.
The full form of ATP is adenosine triphosphate, and this ATP is known as currency of the cell. The energy which are formed inside the mitochondria, it's formed in the form of ATP. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी एटीपी की फॉर्म में बनती है और एटीपी की फुल फॉर्म है adenosine triphosphate and it is known as currency of the cell. This is about the mitochondria.